राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हरे कृष्णा हरि बोल। जय हनुमान जयो जय हनुमान, वैष्णव ठाकुर जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। रामनवमी महामहोत्सव की जय। राधा गोविंद देव भगवान की जय। My voice is very soft. There's no English. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। That okay? The sound is fine. हरे कृष्ण। सर्व भक्तांनी कृपया बसून घ्यावे। सब भक्तों से निवेदन है कि आप बैठ जाइए। अब महाराज की कथा शुरू करने जा रहे हैं। तो कथा शुरू होने से पहले मैं परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज का एक संक्षिप्त परिचय आप सबको देता हूं। परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज ये पहले शिक्षण तज्ञ थे और 1983 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन में इस्कॉन में सम्मिलित हुए। उन्होंने इस्कॉन डरबन और भारत में इस्कॉन वृंदावन के मंदिर के माजी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वे एक बहुत प्रेरक वक्ता है, यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर है, और भगवान की और शिल प्रभुपाद की कृपा से शिल प्रभुपाद के अनुवाद और तात्पर्य वाले सारे ग्रंथ उन्होंने वितरित किए हैं, वो उसमें अग्रगण्य है। और महाराज 1991 में भक्ति वेदांत कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर BCEC की स्थापना की है। और ये कॉलेज जप आश्रय कोर्स, कीर्तन आश्रय कोर्स, भक्ति सदाचार कोर्स, योग लैडर यानी कि योग की सीढ़ी, ये कोर्स देते हैं। ये कोर्स जाके भक्ति शास्त्री की पदवी, भक्ति वैभव की पदवी और भक्ति वेदांत पदवी तक अभ्यासक्रम में जाते हैं। तो आज तक यानी यहाँ पे जनवरी 2022 तक
हांगकांग, फिलीपींस, मलेशिया, भारत, इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, त्रिनिदाद, गयाना, केनिया, टांजानिया, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस, इन सभी जगहों पे इस बीसीईसी के माध्यम से पूरे जगत में 42,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को महाराज ने ये अभ्यासक्रम सिखाया है। तो महाराज इस्कॉन लीडरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सिस्टम, इस्कॉन लीड्स के भी संचालक है और इस पद पे वो काम कर चुके हैं, जो नेतृत्व की प्रशिक्षण की सुविधा देता है, लीडरशिप कोर्सेस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक है महाराज, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो बहुत प्रवास भी करते हैं। इस्कॉन के अनेक केंद्रों में, योग केंद्रों में, शालाओं में, पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में, विद्यापीठों में कृष्ण भावना का उपदेश करते हैं और उसकी सीख देते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें उनका सत्संग प्राप्त होता है, तो हम शांति से उनका संदेश प्राप्त करेंगे, उनका सत्संग प्राप्त करेंगे। महाराज Turn the fan. Turn more. 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 Okay, fine. So we shall divide the presentation into several parts this evening. हम आज शाम के इस व्याख्यान को अलग अलग विभागों में बताएंगे। The first part I'll speak about how I was born in South Africa. मैं इसके पहले भाग में मैं कैसे जन्मा इसके बारे में बताता हूँ। And the next part is Srila Prabhupada gives a very nice, perfect summary of Ram Leela and the Ramayana. और उसका दूसरा भाग रहेगा जिसमें हम श्रील प्रभुपाद ने जो रामायण का सार बताया है उस पे चर्चा करेंगे। In the Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवत में। So that's the second part. The third part is that you have to ask me questions that you have doubts about. तीसरे विभाग में आप मुझे प्रश्न पूछिए जिसमें कि आपको आशंकाएं हैं। Because it's a little late for the children. क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ी सी देर हो चुकी है। So if you ask me questions, then I can serve you better according to how you want to be served. तो महाराज की ये इच्छा है कि आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो महाराज को भी अच्छे से सेवा देने का मौका मिलेगा। That okay? This translation. Garland is translated. Garland. Prabhu. Prabhu. Haribo. He's translating. It's like Ganapati. Yes, Devgan. मैं भाषांतर कर रहा हूं तो मैं गणपति हूँ ऐसे महाराज बोल रहे हैं। He translated that. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then the final part is we're going to present a book called I'll Build Your Temple, the Jew Story, which is ISKCON's very own Mahabharat. Oh yeah. तो महाराज कह रहे हैं कि मैं शेष भाग में प्रवचन के इस पुस्तक के बारे में बताऊंगा, आई विल बिल्ड यू अ टेंपल द जू स्टोरी। तो ये इस्कॉन का खुद का एक महाभारत है, Modern day Mahabharata. आज के दिन का महाभारत। There's Duryodhan, there's Dushashan there. त्याच्यामध्ये दुर्योधन, दुःशासन सगळे आहे। And what's that one with the dice? शकुनी। Sakuni like people are there too. त्यामध्ये शकुनी सारखे पण लोक आहेत, उसमें शकुनी जैसे भी लोग हैं। Yep, I'm allergic to that flower, but it's a little far. And don't translate that.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So people do wonder, what did I say? I just Huh? sorry. You have to be focused. I didn't bring danda, be careful. Prabhu. Okay. So some people wonder, how is it that I'm Indian bodied but I was born in Durban, South Africa? I don't look African. बहुत जनों को लगता है कि मैं भारतीय शरीर दिखता हूँ, पर मैं डरबन में कैसे पैदा हुआ। In 1820, the British were ruling India. 1820 में ब्रिटिश लोगों ने भारत पे राज किया। They were not so very good. वो बहुत कुछ अच्छा नहीं था। So they took my forefathers, the first ones, from Chennai, Madras, and also from forefathers from Malabar in Kerala. मेरे पूर्वजों को अंग्रेजों ने चेन्नई से और मलबार से लिया। So they brought them as slaves. उन्होंने मेरे पूर्वजों को वहां पे गुलाम करके लेके गए। They didn't pay them any money. उन्होंने कुछ भी पैसा नहीं दिया। They made them cut sugar cane. Cut sugar cane. Labra. हाँ, वो गन्ना काटने के लिए लेके गए, गन्ना मजदूर करके लेके गए। You cut sugar cane in your life? नो Try it. It's good exercise. Translate. महाराज बोल रहे हैं कि आपने कभी गन्ना काटा है क्या? अच्छा एक्सरसाइज है, आप कीजिए। And they didn't give them any Lakshmi. They gave them ration. Beans, dal, rice, and clothes. उन्होंने कुछ भी लक्ष्मी नहीं दिया, उन्होंने राशन, कपड़े वगैरह दिए। So I'm fifth generation from those Indians who came in 1820. 1820 में जो मेरे पूर्वज थे, उनके बाद मैं उनकी 5वीं संतान हूँ। And they didn't give us any education. उन्होंने कोई भी शिक्षण प्रशिक्षण भी नहीं दिया। I'm the youngest in the family and I'm the first one to graduate from university. मैं सबसे तरुण हूँ और मैं सबसे पहले ग्रेजुएट होने वाला भी हूँ। Why the clip? अच्छा, Okay. So now we shall read from Srimad Bhagavatam. And I have an OCI card, Overseas Citizen of India. I'm citizen of India. मैं भारत का ही नागरिक हूँ, बाहर रहने वाला भारत का नागरिक हूँ। अभी हम भागवत पढ़ेंगे। So my mama, I got it. She used to speak Tamil at home. I can speak little Tamil. मेरी माँ जो थी वो तमिल बोलती थी, तो मैं भी थोड़ा तमिल बोल सकता हूँ। And I can speak one African language called Zulu. और मैं जुलू नाम की एक अफ्रीकन भाषा भी बोल सकता हूँ। Like when you say, ask somebody, how are you? We say, Wunjani. And you shake the head too. Shake head. जब कोई हमें पूछता है कि हम कैसे हैं, तो महाराज बोलते हैं उनके जुलू लैंग्वेज में, वुंजानु। Make sure he gets Mahaprasad. So we shall read from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 7, entitled Schedule Incarnations, text number 23. तो श्रीमद् भागवत का अध्याय 7 का भागवत के दूसरे स्कंद के अध्याय 7 का श्लोक क्रमांक 23 हम पढ़ेंगे।
and I'll read this sloka myself. I missed. You have to pay attention. I said I'll read this sloka myself. हाँ, तो श्लोक महाराज खुद पढ़ेंगे. Asmat prasada samukha kalaya kalesha ikshvakuvamsa avatirya guru nideshe tistanvanamsa dahitanuja avivesha yasmin virudya dasakandara atim achat. So you can read the translation and the beautiful summarized purport of Srila Prabhupada of the Ramayana and Lord Ramachandra with his associates. तो मैं अनुवाद पढ़ता हूँ और उसके बाद तात्पर्य पढ़ता हूँ. अनुवाद इस प्रकार है. इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण श्री भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए. वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे. अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया, जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया. तात्पर्य: भगवान राम श्री भगवान है और उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके अंश है. चारों भाई विष्णु तत्व है. वे कभी भी सामान्य मानव प्राणी नहीं है. रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान रामचंद्र जी की छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्माएं बताते हैं, किंतु ईश्वरी विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र इस श्रीमद् भागवत में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि उनके भाई अनेक स्वांश थे. मूल रूप में वे भगवान रामचंद्र वासुदेव के, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार है, जो भगवान के ही अंश है. लक्ष्मी जी सीता भगवान की अंतरंगा शक्ति है. वे न तो सामान्य स्त्री है और न ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति की अवतार है. दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति है और वे शिव जी की संगिनी है. जैसा कि भगवत गीता 4.7 में कहा गया है, जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं. भगवान रामचंद्र भी ऐसी ही परिस्थितियों में प्रकट हुए. उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के ही अंश रूप भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थी. भगवान रामचंद्र को उनके पिता महाराज भांति उनकी आज्ञा का पालन किया. यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया जा रहा था, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता ने भी वैसी ही इच्छा व्यक्त की. भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इन्हें साथ लेकर दंडकारण्य में 14 वर्षों तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया. वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया. इस संघर्ष का अंत परम शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार समेत विनाश के साथ हुआ. सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी है, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्या नहीं है. वे समस्त जीवों द्वारा, यहाँ तक कि अपने पति रामचंद्र जी के द्वारा भी पूजनीय है. रावण जैसा भौतिकवादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता. उल्टे वह राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों का आवाहन करता है. जो भौतिकवादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का अपहरण या शोषण रावण की नीति है. रावण अत्यंत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था. चूंकि उसे भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य न थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था, फलतः वह मारा गया और उसके साथ उसका ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया. भगवान रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार है, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में कलेशः अर्थात ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है. श्रील प्रभुपाद की जय. Now you may ask some questions in a minute. 1. Why is Lord Brahma called the adi-purusham? 2. Why is Lord Brahma called the adi-purusham? 3. Why is Lord Brahma called the adi-purusham? 4. Why is Lord Brahma called the adi-purusham?
अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं। Om Ajnanam Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Is there like wireless microphones around? Wireless microphones. Test. Hare Krishna. How many? Hare Krishna. How many microphones? I saw a few. God. Only one. Okay. Yes, another one. Two. Oh, sound man? They can ask questions also in Hindi. आप हिंदी में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके महाराज को पूछूंगा। If you don't have question, I have question. अगर आप सबको प्रश्न नहीं है तो मुझे प्रश्न है। Hare Krishna Prabhuji. My question is. Can you eat the microphone? Eat. Hare Krishna Prabhuji. Oh, he knows English. What's your name? Guru Charan Das. Hare is a guru. Okay, Guru Charan Prabhu. Prabhuji, my question is. I'm a Maharaj. Says Maharaj. Maharaj. Not he. Yeah, you translate. I'm saying Maharaj. महाराज म्हणतात की महाराज आहे असं मला संबोधन करा, प्रभुजी म्हणू नका. Tell him he's naughty. Tell him in Hindi. Say he's naughty. बहुत खोड़कर है. But he's naughty in a nice way. Say like that. परंतु फार ते काही चांगलं नाही, बहुत अच्छा नहीं है ऐसा. Okay, Guru Charan Prabhu, tell us your question. Maharaji, my question is when Father told Bhagwan Ram to get exiled for 14 years, but as he was actually a king of Ayodhya, so instead of accepting to go to exile, shouldn't he have stayed back to take care of the whole people of Ayodhya? Yes, his question is, how can God be banished to the forest? That's his question, right? तो प्रभु जी का प्रश्न ऐसा है कि भगवान राम ये राजा है और भगवान भी है, तो उन्हें जंगल में कैसे भेजा जा सकता है? वो जंगल वनवास में कैसे भेजा जा सकता है? I know a little Hindi, Prabhu. Yep. तो दशरथ महाराज ने तो दशरथ महाराज की आज्ञा फिर राम भगवान ने क्यों मानी, ऐसा प्रश्न है. Lord Ramachandra did not appear to stay in Ayodhya. भगवान रामचंद्र जो थे वो अयोध्या में रहने के लिए प्रकट नहीं हुए. Because this Ayodhya was full of dharma. There's no problem in Ayodhya. क्योंकि अयोध्या में कुछ भी प्रश्न नहीं था, वहां पे धर्म का रूप प्रकट हुआ था. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत
That is why Lord Ramachandra appeared. Srila Prabhupada says like that. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब जब धर्म को ग्लानि आती है तो भगवान प्रकट होते हैं. So the problem was in Dandakaranya and Sri Lanka, not in Ayodhya. तो प्रश्न अयोध्या में नहीं था, वो दंडकारण्य में और श्रीलंका में था. Got answer? पक्का? तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? प्रभु जी बोल रहे हैं हाँ मिल गया. At the same time, they will not allow Lord Ramachandra to leave Ayodhya, the citizens. तब अयोध्या के जो नागरिक थे वो भी भगवान को जाने के लिए छोड़ नहीं रहे थे. So externally, he followed the order of his father. He was not banished, Prabhupada says. He followed the order of Maharaj Dasaratha. तो भगवान रामचंद्र को निकाला नहीं गया था या वनवास पे भेजा नहीं गया था, परंतु उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया. And therefore he went to Dandakaranya and Lanka and vanquished the demons. Paritranaya saranam vinashaya duskritam. इसीलिए वो दंडकारण्य और श्रीलंका गए थे ताकि वो दुष्टों का संहार कर सके और सत्पुरुषों का रक्षण कर सके. Next question. Hare Krishna. Ask him his name. हरे कृष्णा, कृपया आपका नाम बताइए. Microphone on. Help him. Hare Krishna, my name is Vijay. He speaks English. He also. You're gonna take these books later. आप सब इंग्लिश बोलते हैं, आप सबको ये पुस्तक लेना पड़ेगा. We'll start with him, you know? Shri Guru Charan. श्री गुरुचरण प्रभु, आपको ये पुस्तक लेना पड़ेगा. No, you're not ordering one book. I'll explain to you just now. What's your name? Vijay. विजय. Hi, Vijay. Very pleased to see you, blessed to see you. I'm also happy to be in your nice company. Translate. प्रभु जी बोल रहे हैं कि आपका सत्संग पाके हम बहुत खुश हैं. महाराज बोल रहे हैं कि आप सबका सत्संग पाके मैं भी बहुत आनंदित हूँ. Yeah, my question is, out of various incarnation of Lord Vishnu, why only Rama and Krishna are so worshipped or like? प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान के इतने सारे अवतार हैं, उसमें से भगवान राम और भगवान कृष्ण, इनको ही क्यों ज्यादा पूजा जाता है? So now my question to you, to answer your question, you ready? तो आपके प्रश्न का उत्तर देते वक्त मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आप तैयार है? Besides Radha, Krishna and Sita, Ram, Lakshman, Hanuman, who else would you like to serve and worship? You tell us. राधा कृष्ण और सीता राम, इनके सिवा आप किनकी पूजा करना He said चाहते हो? Shiva. सीता राम. Sorry. I did that on purpose. I put it in his head. सिवाय I meant. Who would you like to serve and worship other than Radha, Krishna, Sita, Ram, Lakshman? Who would you like? सीता राम लक्ष्मण और I don't think so. Huh? I don't think so. Anybody else? Why? प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैं नहीं सोचता कि मैं किसी और की पूजा करूंगा. तो महाराज पूछ रहे हैं कि क्यों? Arey, you must frighten him, you know? You must say, why? Say like that. क्यों? You know, the bhav must be. Yeah, I feel really blessed when I chant Hare Krishna, Hare Rama, when I worship Rama, Lord Rama or Krishna. Yes. मुझे बहुत आनंद होता है जब मैं राम कृष्ण इनकी पूजा करता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का गान करता हूँ. Ete chamsa kala pumsam Krishnastu Bhagavan Swayam. So Krishna is not an avatar. Krishna is avatari, is the source of all incarnations.
कृष्ण ये एक अवतार नहीं है, वो अवतारी है, उनसे सब अवतार प्रकट होते हैं। But Lord Ramachandra also is full, Kalesha. Read the last part of the purport from Srila Prabhupada. He's also full in his opulence, Kalesha. तो महाराज बोल रहे हैं कि भगवान रामचंद्र भी Last paragraph. पूर्ण अवतार है, वो कला अवतार नहीं है। Prabhupada uses the word Kala Isha. प्रभुपाद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. धन्यवाद। तो यहाँ पे सबसे अंत का जो वाक्य है, भगवान रामचंद्र छहों पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार है, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में कलेशः अर्थात ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। That okay? ठीक है क्या? Keep the microphone next to that person by you, neighbor. आपके पास वाले जो है उनके पास ये माइक्रोफोन रखिए। Now, before we get to Prabhu, any Matajis, Vaishnavis, girls have any question? Say in Hindi. पहले किसी और का प्रश्न लेने से पहले किसी माता जी का, वैष्णवी का कोई प्रश्न है क्या? Otherwise, I have question for you. क्योंकि मुझे आपके लिए एक प्रश्न है। Did Ravana really kidnap Sita? Yes or no? Nice, thank you. क्या रावण ने सही में सीता को अपहरण किया था क्या? Yes or no? नहीं। That which is spiritual cannot be touched by material. जो आध्यात्मिक है वो भौतिकता से कभी स्पर्श नहीं कर सकता। प्रभु, name? प्रभु जी, सर्वप्रथम आपका नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। महाराज जी, my name is Vinayak. Vinayak. Yeah. Okay. Okay. So now here there are a lot of people who are in business, in profession, taking care of family. And when I was just hearing your introduction, leadership was the one word which I was really amazed to hear that. Now, for all these people taking the values of Lord Rama around leadership, what will be one advice you would like to give all people here? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हम सब गृहस्थ हैं और हम सब अपने अपने What's his name? Vinayak. Vinayak. तो हम सब प्रभु जी का नाम विनायक है। उनका प्रश्न ऐसा है कि हम सब गृहस्थ लोग अपनी अपनी गृहस्थी में, अपने कार्यों में लगे रहते हैं, अपने अपने जगह पे हम कार्य के लिए जाते हैं। तो ऐसे में हमें आपका ये जो लीडरशिप यानी नेता का जो आपका प्रोफाइल है वो देख के हमें बहुत आनंद हुआ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में किस तरह से भगवान राम का उदाहरण लेके एक नेता बन सकते हैं। Tell him all the questions so far were glorious. 1, 2, 3 glorious questions. महाराज बोल रहे हैं कि सब लोगों ने जिन्होंने प्रश्न पूछे वो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, उनको अच्छे लगे। So Hanuman was in Rameshwaram and he was carrying big boulders. He was carrying parts of hill and stones to help build the bridge to Lanka. जब रामेश्वरम में हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत उठा रहे थे, बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे, तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे थे। So Hanuman was bringing the boulders and he was saying, Jai Shri Ram. जय श्री राम। तो हनुमान जी जब बड़े बड़े पर्वत उठा के ला रहे थे तो वो कह रहे थे जय श्री राम। Louder. जय श्री राम। Thank you. Now, one time he was bringing one boulder, like a big stone, and he was about to put his foot there. He almost tramped one squirrel. You know squirrel? तो जब हनुमान जी एक बड़ा सा पत्थर मार्ग में रखने वाले थे तो तब वहां पे एक गिलहरी उनको दिखी
जिसके ऊपर वो पैर रखने ही जा रहे थे। And the squirrel was, with its front paws, was moving some grains towards the ocean to help build the bridge. तो वो Small grain. जो गिलहरी थी अपने छोटे छोटे पैरों से वहां की जो मिट्टी है वो कुरेद के ये पुल बनाने में सहायता कर रही थी। Then Hanuman chastised the squirrel. तब हनुमान ने बहुत गुस्से में आके उस गिलहरी को डांटा। What are you going to accomplish with your little grains of sand? Can't you see that I am throwing big boulders and the bridge will be finished quickly? हनुमान जी ने कहा कि ये गिलहरी तुम ये क्या कर रही हो, तुम देख नहीं रही हो क्या मैं बड़े बड़े पत्थर ला के यहाँ पे रख रहा हूँ, चलो हटो यहाँ से। Then Hanuman was surprised. The squirrel could speak. हनुमान जी बहुत अचंभित हुए कि वो गिलहरी बोल पाती थी। And the squirrel with its paws, front paws, two front legs, it did this to Hanuman. गिलहरी ने अपने दोनों हाथ जोड़ के हनुमान जी से प्रार्थना की। And the squirrel said in a very humble tone to Hanuman, "But I also want to serve Ram." गिलहरी जो थी वो विनम्रता से बहुत हनुमान जी को बोल रही थी कि मुझे भी भगवान राम की सेवा करनी है। So Ramachandra, Bhagavan, was nearby. भगवान रामचंद्र उधर ही थे And he heard this exchange. और उन्होंने ये संभाषण सुना। He said, "Hanuman, come here." उन्होंने बोला हनुमान यहाँ पे आओ। The squirrel also wants to serve me. वो Just like you do. वो गिलहरी भी आप जैसे सेवा कर रहे हो वैसे ही वो गिलहरी भी सेवा करना चाहती है। And the squirrel is serving fully according to his capacity. और वो जो गिलहरी है अपना पूरा सामर्थ्य लगा के सेवा कर रही है। So Lord Ramachandra continued, "In my eyes, both of you are serving the same way." तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि आप दोनों भी उतनी ही सेवा कर रही हो मेरी। Then he chastised Hanuman. और He said, "You should know, besides you carrying the boulders, it's I am making those boulders float, not you." तो भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को बहुत गुस्से में आके कहा कि ये जो बड़े बड़े पत्थर है वो पानी में तैरने का काम मेरी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से नहीं। So Hanuman didn't change his size, but his consciousness became smaller than the squirrel. तो हनुमान जी ने ये भगवान रामचंद्र से सुनने के बाद उनका खुद की चेतना उस गिलहरी से भी छोटी हो गई, उनका बाह्य आकार उतना ही था। So Vinayak, you have microphone? Yes. You have children? Yes, I have two kids, two daughters. Where are they? They are here. महाराज पूछ रहे हैं कि आपके अपत्य है क्या? Yes, तो I have two daughters. They must be roaming. They must be playing around. रघु जी बोल रहे हैं कि मेरी दो बच्चियां हैं, वो यहीं पे खेल रही होंगी। What's the age? Elder one is 12 years and younger one is 6 years. Yes. 12 साल और 6 साल की बच्चियां। So the children also can serve according to their capacity, fully. तो वो भी अपनी मर्यादा से, अपनी क्षमता से सेवा कर सकती हैं। It's not that you, the father, you are serving more than them. No. ऐसा नहीं है कि आप पिता होके बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हो। Ask Vinayak if that's okay for one lesson. विनायक जी आपसे महाराज पूछ रहे हैं कि वो ये ठीक है क्या उत्तर? Yes, completely. Thank you so much. विनायक जी बहुत खुश है कि ये उत्तर बहुत परिपूर्ण है। Next question. Any of the Matajis have question? Vaishnavis, girls. Behind you. Hello. What's that? Hare Krishna. That's better. Say loudly. Hare Krishna. Chant 2 words at a time and we'll chant after you the whole Maha Mantra loudly. Hare Krishna, Hare Krishna. 2 words at a time. आप सिर्फ 2 शब्द एक बार बोलिए महामंत्र के, हम आपके पीछे कहेंगे। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Krishna Krishna. You must. नहीं। Hare Krishna.
हरे Help. You आप next, तो help. Start again. You'll do good. No, not you. The Mataji next to him is up, not you. He's not here. Got it. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे. It's better than hello. What's your name? आपका नाम? देवयानी देवयानी. Devyani. Huh? It's there in the Srimad Bhagavatam. इनका नाम श्रीमद् भागवत में भी है. She's not in the Srimad Bhagavatam. Devyani, the other one is there. ये श्रीमद् भागवत में नहीं है, दूसरी देवयानी है. So Devyani, your mama and papa here? देवयानी, आपके पिताजी और माँ यहाँ है क्या? नो नहीं. No. Hold microphone close. You go to school. दे आर नॉट हियर You go to school. आई एम आप पाठशाला में जाती हो क्या? या आई एम मैं कॉलेज जाती हूँ College. वो महाविद्यालय में जाती है. Mahavidyalaya. आई एम इन फर्स्ट ईयर You in first year मैं या in college. यस Okay, what's your nice question? आपका प्रश्न क्या है? Make sure it's nice. बहुत अच्छा है, ऐसा प्रश्न कीजिए. गुरुजी मेरा No, क्वेश्चन say ये है Maharaj, say Maharaj. आप महाराज बोलिए. महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि श्री कृष्ण ने जिनके जिनके वध किए थे उनको मुक्ति मिली थी पर उन्होंने पाप किए थे को मुक्ति क्यों मिली फिर Maharaj, her question is, Lord Krishna killed many demons who were sinful and they got liberated. How is it that they got liberated even being so much sinful? Devyani. Devyani. You want you want them to suffer? देवयानी जी, आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में चले जाए? Say yes or no. यस Why? because they had done so many bad So many. works क्योंकि उन्होंने इतने बुरे कार्य किए हैं, तो उनको मुक्ति के अधिकार कैसे मिलेगा? Give me two names आप मुझे 2 नाम बताइए असुरों के जिनको. that Krishna कंस liberated. कंस. One is Kans. Yeah. So Srila Prabhupada has one disciple शिल प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, and he names him. Your name is Kansa Hanta. प्रभुपाद उनको नाम देते हैं, आपका नाम है कंस हंता. So he looked at Srila Prabhupada. That's my name. Yes, Kansa Hanta Das. वो प्रभुपाद को पूछते हैं कि शिल प्रभुपाद Correct. ये Your hand मेरा must go नाम है, like that too. क्या ये मेरा नाम है? तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, कंस हंत दास. Good. So he used to serve in South Africa with all of us. तो वो हमारे साथ दक्षिण अफ्रीका में सेवा करते थे. So sometimes his god brothers used to call him, "Hey, come sir, come." तो कभी कभी उनके गुरु बंधु उनको बुलाते थे, ए कंस हंत आ जाओ, कंस आ जाओ. Can you imagine how important Kamsa is? The Prabhupada will give a name, Kamsa Hanta, the killer of Kamsa. तो आप समझ सकते हो कि कंस कितने महत्वपूर्ण थे कि श्रील प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य का नाम कंस हंत दिया. Dharmo projita kaitava nirmatsaranam. That the Srimad Bhagavatam is beyond the cheating propensity and it is Amala Puranam. It is pure. तो श्रीमद् भागवत बहुत ही शुद्ध, किसी भी धोखे के बिना ऐसा ग्रंथ है. So Kamsa is an associate of Krishna.
तो कंस जो है भगवान कृष्ण के पार्षद है, as much as Duryodhan and Dushashan and Ravana. जितने दुर्योधन, दुशासन और रावण पार्षद है उतने ही They come under the Leela Shakti or pastime potency of the Lord. वो भगवान की लीला शक्ति के लिए प्रकट होते हैं भगवान के साथ। Because Sri Krishna or Sri Ramachandra, they don't need to come to kill the demons. They don't need to do that. तो श्री कृष्ण, श्री राम, इनको खुद आने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे असुरों का संहार करने के लिए। That can be done by the modes of material nature, वो तो by Maya. प्रकृति के गुणों से, माया से भी उनका संहार हो सकता है। So one demon will make one nuclear word, another demon will make, and then they kill each other. Why Krishna has to come? Material nature does it. एक असुर अणु युद्ध करता है, दूसरा भी असुर अणु युद्ध करता है और दोनों एक दूसरे में मिट जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण आने की क्यों जरूरत ही नहीं है। But when Krishna wants to fight, पर जब कृष्ण को खुद को युद्ध करने की इच्छा होती है, he won't fight with Sri Ram and Subal. That's like mock fighting, you know. तो वो अपने दोस्तों के साथ, श्री राम, सुबाल के साथ ये युद्ध नहीं करेंगे। He वो wants तो to have a बहुत real fight. क्योंकि उनको बहुत सही में युद्ध करना होता है। And Kamsa said, I will kill you or you kill me. That's real fight. उनको ऐसा युद्ध करना होता है कि या तो तुम मुझे मारो, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। So they come under the pastime potency, according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Leela Shakti. They take part in the Lord's Leela or pastime. तो वो सब जो है वो लीला शक्ति में भगवान के भाग लेने के लिए आते हैं, ऐसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। Devayani, that was very important question you asked. देवयानी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। Are you satisfied with the answer? आप इस उत्तर से संतुष्ट हो? Yes. Thank you very much. Hare Krishna. धन्यवाद। Let's chant for these devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। You take more questions? Yes. Hello. Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. You have question, eh? See, question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Child is hand up. 12. They all can come for Mangalati tomorrow morning. 12 प्रश्न है, तो वो जिनको प्रश्न है वो कल मंगल आरती में आएंगे क्या? महाराज पूछ रहे हैं। तो महाराज आपको बुला रहे हैं मंगल आरती में। So tomorrow morning I'll give class again. What time? 8:15 in the morning. So if some of you would like to ask the questions then and you can come, would be nice. But if you cannot come, we may have to take some of your questions now. तो कल मेरा फिर से एक प्रवचन है 8:15 बजे श्रीमद् भागवत का। तो आप सबको जो भी जिसको भी प्रश्न होगा तो आप फिर से कल आ सकते हो, मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। Mata, what's your name? Aarti. Ah. Sometimes people come to see Aarti and do puja. कभी कभी लोग Somebody's name is Puja also. Right? लोग कभी कभी आरती के लिए आते हैं और पूजा करते हैं। Yes, Aarti, what's your question? महाराज, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब भी हम भक्ति में मार्ग में आते हैं तो भगवान हमें सिलेक्ट करते हैं और हम भगवान को सिलेक्ट करते हैं। एंड आपका कोई एक्सपीरियंस? No, one question at a time. How many questions she has? आपके कितने प्रश्न हैं? एक ही है। एक। Continue. तो मुझे वो जानना था, एक्चुअली भक्ति मार्ग में भगवान हमें सिलेक्ट करते हैं और हम भगवान को सिलेक्ट करते हैं। एंड आपका एक एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी आपका लाइफ का वे है उसमें बापा ने आपको दर्शन दिए हैं, तो वो कैसे है? तो महाराज, her question is that whether we select our worshipable God or God selects us for getting worshipped, and she also wants
your experience or dealing with God? That's two questions. वो तो दो प्रश्न है. This Aarti, she's quite naughty, you know. आरती जी बहुत ही Okay. In the material world, we have no choice. भौतिक जगत में हमारे पास कोई भी पर्याय नहीं है. But Maya makes it feel that you are choosing. बट माया हमें ऐसा महसूस करवाती है कि हम खुद कुछ पर्याय को चुन रहे हैं. And when you do choose, it's always a mistake. और जब आप खुद पर्याय लेते हैं तो वो हमेशा गलत होता है. Because your decisions will never make you happy in the material world. क्योंकि आपका जो पर्याय है वो आपको कभी भी भौतिक जगत में आनंद नहीं दे सकता. So when one comes in the association of devotees, they pave the path for you. तो आप जब भक्तों के सत्संग में आते हो तो आपके लिए भक्त एक मार्ग बनाते हैं. But bhakti is independent and free. परंतु भक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है. Whereas if you're already a mother or a wife, you have no choice. जबकि आपकी माता कौन होगी और आपकी बेटी कौन होगी, आप कभी भी इसका ये नहीं विकल्प नहीं चुनते. So bhakti is independent and free. तो भक्ति जो है वो बहुत ही मुक्त है. One is not forced to chant the holy names. किसी को भी ऐसा ये नहीं किया जाता, जोर नहीं दिया जाता कि आपको जप करना ही है. One is not forced to serve devotees. किसी को भी ऐसा जानबूझ के बताया नहीं जाता कि आपको सेवा करनी ही पड़ेगी. But you can be guided to do so. परंतु आपको इसके लिए मार्गदर्शन मिल सकता है. Because it is good for you. और वो आपके लिए अच्छा है. Ask Aarti if that's all right. आरती जी, आपको इस प्रश्न के उत्तर का समाधान मिल गया. The other question is personal. I won't answer. दूसरा जो प्रश्न है वो महाराज का खुद के जीवन का है तो वो नहीं करेंगे. And I'll tell you why. मैं बोलता हूँ आपको क्यों. So Aarti, do you have brothers and sisters? आरती जी आपके Microphone. हाँ है. How many? दो. Two. एक सिस्टर एंड एक ब्रदर. आपके भाई है बहन है, तो आरती जी ने बोला कि मेरे एक भाई और एक बहन है. So sometimes the three children, which means you, your sister and your brother, are with mama and papa, right? कभी कभी ऐसा होता है कि आप तीनों, आपके बहन और भाई और आप तीनों भी आपके माँ के साथ वार्तालाप कर रहे हैं. हाँ. So that is your public relationship with your family, because all the whole family members are there. तो आपका ये जो नाता है वो वैयक्तिक नहीं है, पब्लिक. अच्छा. वैयक्तिक बहुत नहीं अच्छा. है. Yes. That is called kirtan. Like today we were hearing some bhajans and kirtan. That is called kirtan. Public relationship. तो कीर्तन जिसको हम कहते हैं आज जो हमने किया, हाँ. वो समाज में किया जाता है. अच्छा. But sometimes you'll tell mama and papa, can you tell my brother and sister, I just want to be with the both of you. कभी कभी आप माँ को बोलते हो कि मैं सिर्फ अपने भक्तों के साथ रहना चाहती हूँ. So mama and papa will tell your brother and sister, can you go outside? Aarti wants to be alone with us all, without you. तो आपके माँ और पिताजी बोलते हैं कि आरती को हमारे साथ संवाद करना है, इसीलिए कृपया आप बाहर जा सकते हो क्या. That is called your private or personal relationship with your mama and papa. Yes. तो इसको बोलते हैं कि आपके माता और पिताजी के साथ एक वैयक्तिक नाता है. And that is called japa. और उसको जप बोलते हैं. जप. Yes. Now I have a question for you. अभी मेरा एक प्रश्न है आपसे. हाँ, बोलिए. Can you explain your personal and private relationship with your mama and papa? Can you explain to me? क्या आप आपके माता और पिता के साथ आपका जो बहुत वैयक्तिक संबंध है, आप उसका विचार मुझे बता सकते हो क्या? Yes or no? No. Good. नहीं, बराबर, सही. Actually यहाँ मैं. One second. Now she's speaking English. Nobody can explain
your personal and private relationship with Radha Krishna. Just as much as you cannot explain your personal relationship with your mama and papa. Even your brother and sister will not feel the same way because they also are personal in their own unique and private way. तो आपके माँ के साथ, पिताजी के साथ आपका जो संबंध है वो इस तरह से वैयक्तिक है कि बिल्कुल। आपके भाई और आपके बहन भी आपका जो नाता है उनके साथ वो महसूस नहीं कर सकते, वो बिल्कुल। आप ही खुद महसूस कर सकते हो। बिल्कुल। उसी प्रकार से महाराज बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण के साथ भक्त का जो आदान प्रदान है वो बहुत वैयक्तिक है। अच्छा। So similarly, I cannot answer your second question, but I have answered it. इसीलिए मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, नहीं, yes. फिर भी मैंने उत्तर दिया है। Yes, thanks. Okay? धन्यवाद। She is very happy. वो बहुत आनंद में है। You must thank Devyayani because the microphone came to you and you took it from her next door. आपको देवयानी को धन्यवाद देना होगा क्योंकि देवयानी की वजह से आपके पास भी माइक आया। Good. Now I don't know what to do because it's time and there's so many hands up for questions. What should I do? Can you advise me? Okay. Vedanta Chaitanya Prabhu said we'll continue the questions tomorrow morning. If you can come would be nice. It's not late and it's not early. It's at 8:15. तो वेदांत चैतन्य प्रभु का कहना है कि कल हम बाकी के प्रश्न लेंगे क्योंकि बहुत सुबह भी आपको नहीं आना है, कल 8:15 पे आपको सबको आना है। तो And I'm leaving at midday. और मैं दिन के मध्य में जाने वाला हूँ यहाँ से। So if you'd like to ask questions, there's so many, like 10, 12 devotees. Please try if you can to come tomorrow morning. Try. तो आप सब कल सुबह आइए भागवत वर्ग में, तो वहाँ पे हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। Okay, now we come to ISKCON's Mahabharat. अभी हम इस्कॉन के महाभारत के बारे में आते हैं विषय पे। Shri Guru Charan, come inside. Don't come around and go away. Inside. श्री गुरु चरण जी आप अंदर आ जाइए। Don't come through the window. आप उधर से आइए। Huh? He can't walk. Then get him chair. Give him chair. Bring chair for him. Shri Guru Charan Prabhu is coming around. While he's coming around, I will explain this book. जब तक वो यहाँ पे पहुँचते हैं तब तक मैं इस पुस्तक के बारे में आपको बताता हूँ। Srila Prabhupada said about this book, it was a good fight, Mahabharata. Someone should write a book about it. It is worth writing history. श्रील प्रभुपाद ने इस पुस्तक के बारे में कहा है कि महाभारत एक बहुत अच्छा कथानक है, इसके बारे में एक पुस्तक लिखनी चाहिए। And then His Holiness Radhanath Swami writes the foreword, which is lengthy, but an excerpt of the foreword is on the back of the book. तो इसके बारे में राधानाथ स्वामी महाराज ने भी लिखा है जो इस पुस्तक के पीछे छपा हुआ है। And Maharaj says, I'll build you a temple transports us into one of the greatest events of our time. ये मंदिर का जो निर्माण हुआ वो एक महान Prabhu, इस समय he का एक needs a महान chair. Get a chair. No, Prabhu, you sit. Take this chair. Because he needs a chair. He can't sit on the floor. Let him sit nicely on the chair. Shri Guru Charan. You okay? Prabhu, what's your name? श्री मोहन प्रभु। Thank you very much. धन्यवाद प्रभु जी। So His Holiness Radhanath Swami says, I'll build you a temple transports us into one of the great events of our time. ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है ये हमारे वक्त की एक बहुत बड़ी घटना है। Giriraj Swami gives us personal witness into the life of Srila Prabhupada. गिरिराज स्वामी श्रील प्रभुपाद के खुद के वैयक्तिक जीवन के बारे में इसमें बहुत कुछ बताते हैं। At a time when Prabhupada faced insurmountable odds at every step.
वो ऐसा वक्त था जब श्रील प्रभुपाद के ऊपर बहुत सारे संकट आए थे। The story reveals Prabhupada's unwavering faith. इस कथा में श्रील प्रभुपाद की श्रद्धा के बारे में जो निश्चल है उसके बारे में बताया। Indomitable courage and profound humility. वो उनका जो बहुत धीर स्वभाव था और उनकी विनम्रता थी, ये दोनों भी इसमें प्रकट है। I'll build your temple is a contemporary narration. ये जो मंदिर निर्माण है, इसका जो कथानक है वो बहुत नया है। That shares the emotions, excitement and message. उसमें बहुत सारा उत्तेजित करने वाली चीजें हैं और एक खास संदेश भी है। Of sacred texts such as the Ramayana, जैसे रामायण है, Mahabharata, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. जैसे महाभारत, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता है। Whose conclusive teachings उसकी पूर्ण जो शिक्षाएं हैं are revealed through the lives of great souls. जो महान लोगों के, महान भक्तों के, महान आत्माओं से प्रकट हुई है। Such as Srila Prabhupada. जैसे कि श्रील प्रभुपाद, Who battle जिन्होंने युद्ध किया and ultimately vanquish और सबका संहार किया। powerful enemies बहुत शक्तिशाली उनके शत्रु थे against seemingly insurmountable odds. जो बहुत ही मुश्किल था। Srila Prabhupada said श्रील प्रभुपाद ने कहा that his project in Bombay कि ये मुंबई का जो निर्माण कार्य है was his heart. उनका हृदय था। Now, in this book, it also explains to some extent how His Holiness Radhanath Swami joined ISKCON in Mumbai. इस पुस्तक में इसका भी कथन किया गया है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने मुंबई में इस्कॉन को कैसे इस्कॉन से वो कैसे जुड़े। And in this book is also explained in detail how His Holiness Lokanath Swami Maharaj joined in Mumbai. इसमें ये भी बताया गया है कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी मुंबई में कैसे इस्कॉन से जुड़े। And this book describes how, when we were not getting permission to get the land, to finally work with the lawyers, one phone call from Shriman Bal Thackeray solved the problem. इस पुस्तक में ऐसा भी कहा है कि जब इसकी कार्यवाही हो रही थी तो उस वक्त वो जमीन मिलने के लिए बाला साहेब ठाकरे ने एक कॉल किया और वो कैसे जमीन मिल गई। And then we get difficulty in getting the NOC, no objection certificate, to build the temple. Big problem. तो उसके बाद भी मंदिर निर्माण के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऐसा जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं मिल रहा था, वो बहुत बड़ी समस्या थी। And then His Holiness Gopal Krishna Goswami with His Holiness Giriraj Swami, somehow without an appointment, went to see C.B. Chavan, the Chief Minister of Maharashtra. तभी गिरिराज स्वामी महाराज और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तब के जो मुख्यमंत्री थे मिस्टर चौहान, उनको मिलने के लिए गए। And by Chavan's intervention, everyone down the line said, yes, 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 yes. उसके बाद चौहान जी के हस्तक्षेप की वजह से उनके नीचे जो भी है सारे लोग हाँ 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 बोलने लगे। And that's how Srila Prabhupada built the temple with his disciples. और इस तरह श्रील प्रभुपाद ने ये मंदिर निर्माण किया उनके शिष्यों के साथ। Yeah. This book answers any question you can ask Srila Prabhupada. इस पुस्तक में श्रील प्रभुपाद को आप जो भी प्रश्न पूछ सकते हो उसका उत्तर है। Whether it's life membership, whether it's dealing with politicians, whether it's Ratha Yatra festivals, or whether it's book distribution, or whether it's making garlands, or whether it's about fighting amongst devotees, It's there. इसमें आपको लाइफ मेंबरशिप कैसे मिलनी चाहिए, आप किस तरह से भक्तों में झगड़ा मिटा सकते हो, किस तरह से आप एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकते हो, इस सभी समस्याओं के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिए हैं। So Vedanta Chaitanya Prabhu, our president here, वेदांत चैतन्य प्रभु जो यहाँ के नायक हैं, he needs books to be sponsored to give those who gave big donations and who give monthly donations, like as a gift, as a gift, right? तो वो आवाहन करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी इन पुस्तकों के वितरण के लिए कुछ लक्ष्मी दे सकता है जिससे कि इन पुस्तकों का वितरण बहुत अच्छे से किया जाए, तो वो कर सकते हैं।
So 10,000 copies were printed in the first printing, and it was distributed within 3 months all over the world in 2021, January, February, March. That's last year. 2021 जनवरी फरवरी और मार्च में इस पुस्तक की 10,000 कॉपी बनाई गई थी और वो इन 3 महीनों में पूरी तरह से बिक गई थी। However, only 1,500 copies was given to India. उसमें से सिर्फ 1,500 पुस्तकें भारत में दी गई है, Because it's printed by the Bhaktivedanta Book Trust Australia. क्योंकि ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ऑस्ट्रेलिया ने इसको प्रिंट किया है। It's a deluxe edition. इसको डिलक्स विशेष एडिशन बोलते हैं। 800 pages. 800 पन्ने हैं इसमें। 40 photos inside. 40 छायाचित्र है इसमें, including how the devotees meet Indira Gandhi. Photo is there. इसमें इंदिरा गांधी के साथ भक्तों के फोटो भी है And other photos. और बहुत सारे फोटो छायाचित्र है। And it's sewn and stitched. और ये बहुत अच्छे से सीली हुई पुस्तक है। And it has a dust cover. उसमें मिट्टी ना लगे इसके लिए भी एक कवर है। It's a very expensive high level printing. ये बहुत ही ज्यादा पैसे से प्रिंट की गई है। So His Holiness Giriraj Swami and I decided to reprint. तो श्री गिरिराज स्वामी महाराज और महाराज ने खुद इसका प्रिंट देने की इच्छा की So है। we reprinted the same book of another 10,000 copies with BBT Australia. तो हमने 10,000 इस पुस्तक की कॉपीज हमने खुद प्रिंट करवाई है बीबीटी ऑस्ट्रेलिया से। And I reserved 7,500 copies for India. और मेरे पास भारत के लिए मैंने 7,000 पुस्तकें रिजर्व की है। And since January, almost 5,000 has already been distributed. और जनवरी से लेके आज तक 5,000 उसमें से चली गई है। And it's not going to be printed again. और इसको फिर से हम प्रिंट नहीं करने वाले हैं। I know most of you liked an Hindi translation of this. आप में से बहुत लोगों को मुझे पता है कि हिंदी में ये पुस्तक पढ़नी The अच्छी लगी। translation is being done, headed up by Shamananda Prabhu from Chopati. श्यामानंद प्रभु जो चौपाटी में है वो इसका हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, But that may take 5 years. पर उसको 5 साल लगेंगे। So this book in the US and in London, UK, sells for $25 and 18 pounds. अमेरिका में $25 और यूके में $80 में ये किताब बिकती है। Not dollar, pound. पाउंड, सॉरी, पाउंड। So that translates to about 2,000 Indian rupees. तो उसका मतलब है 2,000 रुपए भारत के। So I have decided to use Srila Prabhupada's formula for Africa, which is more liberal, and India. तो मैं अफ्रीका में जो हम इसके लिए करते हैं उस तरह से मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। So what sells for 2,000 rupees in the West जो 2,000 रुपए में वेस्ट में पश्चिमी देशों में होता है And वो, this is not printing lakhs and crores of books like a Bhagavad Gita. This is just a special edition. ये लाखों लाखों भगवत गीता जैसे पुस्तक प्रिंट नहीं कर रहे हैं हम, ये बहुत ही विशेष पुस्तक है। So this book is given to you at a retail half price तो in आप India only तो इसका and for Africa. इसकी जो कीमत है वो भारत में और अफ्रीका में आधे कीमत में हम दे रहे हैं। So Sri Guru Charan, how much is the book? तो श्री गुरुचरण जी 1,000 rupees, not 2,000 as in the West. तो ये 1,000 रुपए में, 2,000 नहीं, 1,000 रुपए में। So you don't have to translate what I'm about to ask. How many of you are English-speaking families? Raise your hand. Even if the children speak English. Raise your hand high. High. Oh, there's at least 50 hands up. Right? 50 families. You also? Yes. So say that in Hindi. तो कम से कम यहाँ पे 15 हाथ ऊपर है। So, the temple gets benefit. They make some Lakshmi. We work through the temples. तो मंदिर भी कुछ व्यवस्था करेगा। So the temple is distributing this book and I am promoting it. तो ये मंदिर यहाँ पे इसका वितरण कर रहा है और मैं इसके लिए
मेरी ओर से भी प्रयत्न कर रहा हूँ। And the temple also needs for you to sponsor the book so that our Vedanta Chaitanya and his team, in order to maintain the temple, and people have been contributing for so many years, he can give them this precious gift, the association of Srila Prabhupada and his followers. तो इसके लिए आप में से भक्तों को कुछ लक्ष्मी दान करना चाहिए ताकि इस पुस्तक की कीमत भी कम हो और मंदिर में भी इस पुस्तक का वितरण करने के लिए सुविधा हो, ताकि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको श्रील प्रभुपाद का खुद का एक सत्संग इस पुस्तक के माध्यम से प्राप्त हो। So I am actually done the Bhikshu Sannyasi. मैं भिक्षु सन्यासी हूँ। So we have this front cloth, you know. हमारे पास ये झोला है। Bhikshu means I am a beggar. मैं भिक्षु हूँ। So I'm begging on behalf of ISKCON Nigdi that you please sponsor some books as well as take your own copy. तो मैं इसके लिए भिक्षा मांग रहा हूँ कि आप कुछ पुस्तकों को आपकी ओर से स्पॉन्सर करें और आप भी खुद ले लें। And also those who cannot read English, their children read English, so you can take it for your children. तो जो इंग्लिश भाषा में नहीं पढ़ते हैं उनके बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो अपने बच्चों के लिए तो आप जरूर लेके जाइए। So who would like to start? How many books you'd like to sponsor, and then you take also one for yourself? तो कौन शुरू करना है चाहेगा? Microphone. उनको एक माइक्रोफोन दे दीजिए। What's your name? आपका नाम बताएं। हरे कृष्णा महाराज जी, मेरा नाम है अनुपम। अनुपम प्रभु। अनुपम प्रभु। Anupam. So ask him how many he'd like to sponsor for the temple, and then he'll also get his personal copy. आप मंदिर के लिए कितने पुस्तकों को लक्ष्मी दान देना चाहते हैं, और तो आपको भी पुस्तक मिलेगा। 1 for my family and 2 for the temple. मैं अपने के लिए एक और मंदिर, I will like to sponsor 1 for me or 2 for the temple. Nice. Who's taking notes? प्रभु आप आगे आ जाइए। Stand here. Stand behind him. मेरे पीछे खड़े रहिए। You have to get darshan of Anupam. See, Anupam Prabhu is there. You know who he is? Prabhu. अनुपम प्रभु। What's your name? Arun. And your name again? कृष्णपाद दास। Krishnapad. Arun, put Anupam's name and make sure you get his number. Let's chant for Anupam Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Come. Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Come this way, this way. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. You read English. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Next. आगे। Mataji, microphone please. Thank you, Anupam Prabhu. That's a great धन्यवाद start. अनुपम प्रभु। Mataji, let me see your hand. Raise your hand. See, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. See मैं that mudra? 5 उंगलियां आपकी देख रहा हूँ। Isn't you put your hand up like that? 5. आपने 5 उंगलियां खड़ी की है। Don't put the other hand up. It may become 10. I will sponsor 5 books. And I will one, keep 1 for myself. And 5 for the temple. 4 for the temple. No problem. You want to please me? No. I want to please God. Huh? See, my daughter got admission for. Okay, good. 4 books for the temple and 1 book for yourself. What's your name? Harsha Joshi. हर्षा जोशी माता जी Please ने come and take your book. For the 4 पुस्तक मंदिर के लिए और 1 पुस्तक अपने लिए स्पॉन्सर किया है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mata Hare Aisha, Krishna, Hare Krishna, Krishna Prabhu is coming. Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama, Hare Hare Ram, Rama, Ram Rama Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama, Rama Rama. Ram, Hare Hare. Prabhu, Hare move a Krishna, little. Hare Krishna, Krishna Move that. Krishna, Make Hare a Hare. passage. Hare Ram, Mataji, Ram come this side. Ram, Hare Hare. Hare Where's the photo, Krishna, man? Hare Krishna, Photo. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yeah. Everyone. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Ram, Rama, Hare Ram Rama. Ram, Hare Hare. What's Prabhu's name? Arsha? Prashant. Thank you very much. Who's next? Somebody in the back. You're saying, 5 times 5, you said, I think. You said 5 and you said 5 again. That's 5 times 5. You said प्रभुजी, like that? महाराज म्हणतायत की 5 × 5 असं तुम्ही म्हणताय का? First I asked him 5, then he said another 5. Is it the times or plus? Come here. Give your darshan to everyone. Come here, this side. Prabhu. हरिधाम प्रभु. Haridam, Prabhu. So how many books would you like to sponsor for the temple and take one home? Yes, ma'am. How many? 5 books total. 1 for home, 4 for me. Are you following Harsha? आप हर्षा How को many? ही follow करिए. 5 books. Yes, ma'am. Okay. Let's chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We only reserve 60 books for this place, so make sure it all goes tonight. Next. Prabhu. Prabhu. You can tell us. What's your name? नाम Shankar Avtare. Shankar Avatar, Prabhu. Yeah. You have children who read English also. Nice. How many books you'd like to sponsor? 5 for temple and? That's 6. हरि बोल, हरि बोल. Correct? बराबर है ना? Where's Mataji? Mataji, come. Mataji, you agree with this, right? Money. Please come. Let's chant for Shankar and Mataji. Name? Huh? Mega. Mataji Mega and Prabhu Shankar. Let's chant for them. He's sponsoring 5 books for the temple and 1 for themselves. Please come. 5. Hare Ram Ram. Thank you. Prabhu, you okay? Good? Anyone? Shri Guru Charan, you want, I'm not forcing, but if you can, it would be nice. You want 1 book for yourself? You want to sponsor anything? How many books? Give microphone to. You don't have to come, but you need to come for the photo. How many books? I would like to sponsor 5. And? 1 I will be reading it, I will be giving it back. How many to the temple? Temple 5. And 1 for you, that's 6. Yes. Let's chant for him. Come slowly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare. The reason why I'm not prejudiced when I gave the garland to him,
The reason why I gave the garland to him, he asked the first question. मैं And इनसे then he rolled everyone. Then he initiated answering the questions. And plus, he promised to take books. Thank you very much. Let's chant for him. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज कह रहे हैं कि प्रभु जी ने पहला प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने उनको ये हार दिया है और इनकी वजह से सब लोग प्रश्न पूछने लगे। Thank you. धन्यवाद। Give Mike. He has one request. Hold close. So you are also close to Krishna. So just my request to Yashoda Mata that make me her servant so that I can serve little Krishna. See, when you go back to Mother Yasoda, you put a good word for me. प्रभु जी ने प्रश्न पूछा महाराज से कि आप यशोदा माई से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। You may go first, you know. और महाराज We ने bless you. We bless you to go to Golok Vrindavan. हरे महाराज ने प्रभु जी को आशीर्वाद दिया है कि आप गोलोक वृंदावन जाइए और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए यशोदा माई से। Just give this one life to Krishna. So this material world is not a good place. Prabhu, how are you? You take microphone. What's your nice name? My name is Sri Madhavdas. Sri Madhava. Got the goddess of fortune in his home, you know, Madhava. Follow the goddess of fortune. So how many books you'd like to sponsor for the temple so that they can appeal to people who give big donations, give them a gift? And 4 for the temple and 1 for myself. How many? 4 for the temple and 1 for myself. Let's chant for Sri Madhava. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Haribo. My ears too loud. I'm a little old, you know. जरा धीरे से बजाइए, मुझे तकलीफ होती है। Small pattern. Give him, he'll play. छोटा करता ले लीजिए। You take small. No, for him. Anybody else likes to help us? Please come, please come, please come. I feel very pleased and encouraged in my very first visit to Nigdi, and I feel like coming again. हरि बोल। महाराज निगड़ी के भक्त समुदाय में आके बहुत प्रसन्न है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से निगड़ी मंदिर को आऊं। हरि बोल, हरि बोल। What's your name? Yes, Hare Krishna Maharaj Ji. My name is Sanjay Murari. Sanjay Murari. Yes. How many would you like to sponsor? So I would like to take 1 for myself and I would like to sponsor 1 for temple. 1 for temple. Yeah. Wonderful. 2 books, 1 for him and 1 for temple. You can also do that. Thank you. हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। That little Lali, she's so happy. What's that little girl's name? Behind you, behind you. Yeah, she's so happy. आपके पीछे जो Everyone chant, see, she'll dance. Everyone chant. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। It's so natural for children because they have a purity of innocence. बच्चे इतने शुद्ध है कि हम सब जब हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते हैं तो नैसर्गिक रूप से वो आनंदित होके नाचते हैं। What's the baby's name? उनका नाम क्या है? Anandya. Nice. Anandya, Hare Krishna. She loves to dance naturally. Yes. Who's next? माता जी। Come, microphone. Krishna. Please come here. Prabhu, go a little back. So come here
and face everyone and declare it boldly. Come here. आप सामने How आके many सबको you'd like to बताइए, sponsor? Mataji, बड़ी आवाज में उनको देख के बताइए. Prabhu is here. प्रभु जी आए नहीं है. He didn't come. धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. He didn't come, huh? He has to pay for it, right? उनको इसके लिए कुछ शिक्षा करना पड़ेगा. Bless him. Bless him. I bless. Is video is there? That video is for recording, right? What's his name? Sanjay. Video. We bless Sanjay. You at home. We bless you to pay for all the sponsors' books for Mataji. Sushil Radhika. Sushil Radhika. Sushi? Radhika. Radhika. Sushi Radhika. How many books for the temple? I would like to take for me one, and I will sponsor one. One. Nice. Thank you. Maybe we'll speak to Prabhu to sponsor more later on, right? Please bless him. He will also become devotee. He is already a devotee. You don't know it. We know. You don't know. Let's chant for Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Next. Looks like we're going to run out of stock because all those books are sponsored. We'll give you more stock. Anyone else would like to help us and help the temple with sponsored books? और कोई? Mataji, you have your hand up. You calling somebody? Where's Prabhu? Where's Prabhu? Prabhu, what's his name? Vikash. Vikas Prabhu. Don't. Vikash, please come quickly. Hari Bol. Let's chant for Vikash. He's coming. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So Mataji, what's your name? Vikash. Yeah. Please. Come both of you, come. Mataji, what's your name? Can't hear you. Give microphone. Give microphone to Vikash. And what's her name? Jyoti. Jyoti. So, Vikash is not my problem. She created it. Clearly, she called for you, right? And I saw it. And I put more masala in it. Spice. Vikash, is that okay? Or translate? महाराज बोल रहे हैं कि मेरी इसमें कुछ भी गलती नहीं है. आपकी पत्नी ने आपको वहां से यहाँ पे आपको बुलाया है और उसमें सिर्फ मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है. So how many books you would like him to sponsor? Then he'll add to that number. Give microphone. Remember, he's adding to the number. Be careful. Yeah. I'll buy one and I'll sponsor one. Buy one, sponsor one. Now give microphone. So how many more you'd like to sponsor? I will double it. Double, like 4. Okay. So now he'll double it. He will sponsor 4 and he'll take 1 for home. Is that okay? Am I pushing it or? No, it's okay. I like to push it. Because thank you very much. Yeah. Come take your book. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Come close. Photograph. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Jyoti, thank you very much. You encouraged him. You can fight on the car on the way home. Not now. It's part of the relationship. Okay. महाराज बोल रहे हैं कि आप कार में जाते वक्त झगड़ा मत कीजिए. It's personal. It's a good fight. And this was a good fight, the book also. Anyone else? Come on.
प्रभु महाराज, You coming, Mataji, for book? Please come. Oh, also. And Jyoti, behind you there's an elderly Mataji, and behind her there's somebody. She's smiling. She was laughing when we said they'll fight along the way. What's your... Yeah, you have your son with you. Yes, you. We'll get to you shortly, right? You can't get away. Mataji, please stand here Hare Krishna. and tell everyone how many should like to sponsor and for the temple and how many you'll take home. I would like to sponsor one Of book. course. Okay, I would like to sponsor one book for temple, and I want to buy one for myself. Nice. How much is that in total? Pardon? How much is that in total? totally. Totally, it's two. Total Two. two quantity. 2 rupees. Do? 2,000 rupees. Yes, of course. Now you have your children. I see 2 boys with some boys who came with your children. These were walking. आपके You were बच्चे walking with हैं क्या Mataji, वो? no? No. Okay. You have your family here? No. Okay. What's your name? Pratiksha. Pratisha. Let's chant for Pratisha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare. Oh, Prabhu is there. Your father. Nice. Please. You take it. Hare Krishna. Thank you very much. What's your papa's name? Vijay Kadam. Nice. Thank you very much. Prabhu, you want to come? Microphone for Prabhu. Krishna. Prabhuji. Your name? Come. I think you need little chair. Come, sit here. बसा प्रभुजी. बसा महाराज म्हणतात. Few minutes. Ah, nice. हरि बोल. Like my papa, you know. My name is Shadbhuj Leela Das. Sadbhuj Leela Prabhu. How many books you'd like So, to Maharaj, sponsor for the temple? And I how will many buy one for myself and 4 for sponsor. and 4? All sponsors. Let's chant for Sadbhuj Prakash Prabhu. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Please, take the microphone. What is your good name? Please come. My name is Amar Shah. Amar Shah. Yeah. How many books you'd like to Maharaj, sponsor? I would like to buy one book for myself. Yes. And one book I would like to sponsor for the temple. And one for the temple. Yeah. Wonderful. What? Amar Shah? Amar Shah. Amar Shah. Let's chant for Amar Shah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Photo. Hare Krishna, Krishna Hare Come. Oh, another youth. He's a youth. He's like the youngest one who came now. Come. सबसे तरुण है ये महाराज, उनको Face देख के everyone. आनंदित है. What's your name? Himanshu Ranjan. Hold it close. Himanshu Ranjan. Are you in college or you working? Or? I'm working now. So you're young at heart also. Nice. Translate. आप काम भी कर रहे हो, मुझे लगा आप पढ़ाई कर रहे थे. So how many books you'd like to sponsor for the temple and how many for yourself? Maharaj, I would like to buy one and want to sponsor one book. For One the book for temple and one you'll take for yourself. Thank you very much. Your name again? Himanshu. Himanshu. Let's chant for Himanshu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribol, you have your hand up. Come. Come. Where's Mama and Papa? माता जी आप भी आइए. Come this way. Sit. Your son. Where's mother? Can you see he's wearing saffron? You know what it means? You bless him with that. I mean, if he wears saffron in future, we We'll will bless him to join the brahmachari ashram and she'll cry every day. No, she won't cry. Don't cry. No, They say like that. महाराज बोल रहे हैं कि ये बच्चा हम ब्रह्मचारी बने ऐसी प्रार्थना करेंगे तो माँ रोज रोएगी और माँ कह रही है कि मैं नहीं रोऊंगी. महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सब बोलते हैं. What's your name? His name is Narayan, right? Now Narayan, you like how many fingers you like? Decide how many fingers you like. You like 10 fingers or 9 fingers or how many? Narayan here. 9. 10. Give microphone to me. I didn't hear. Narayan, say Hare Krishna. Hare Krishna. Full mantra. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol! Now, you said you like all fingers, right? Yes or no? How many? How many fingers are there? 9. 9. Good. And the 10th one is the one book for home, right? Right? Yes or no? Say yes. Yes. I told him to say yes. Mataji, you come. So Narayan has declared it boldly. So how many books you'd like to sponsor for the temple and how many you're taking home? One for ourselves and one for ourselves and 2 for a temple. 2 4 is 24. Okay, we'll continue with what he declared. What did he decide? 9 for the temple and 1 for ourselves. Oh, that's the new one. And Srila Prabhupada used to say, and a child shall lead them. Translate. श्रील प्रभुपाद कहते थे कि बच्चे उनको आगे लेके जाएं. You want to stay or you want to go on? He's not sure. You go with Mama, no? Go. He's already half brahmachari. Nice. Same colors. Good. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Thank you, Narayan Prabhu ki. Jai. Narayan Das Brahmachari ki. Jai. She's worried. Thank you. Mataji, you're coming to the front. You're coming here. Oh, nice. Microphone. Give microphone. What's your name? Nita. Face everyone. Nita. Nita. You have children? Yeah. Prabhu. And where's the children? Oh. Prabhu, Nita is calling you, not me. What's your name? Rakesh.
So how many books you'd like to sponsor One for for temple? me or two for the temple. One for you and two for temple. Is that fine? Because you're paying. Let's chant for Nita and Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. I guess that's it, huh? You okay? Mahaprasade Govinde. Mahaprasade Govind. Is prasad for everyone? Huh? Darshan Arti. Oh, there's Darshan Aarti at what time? What time is Darshan Aarti? Oh, come. Bless. Prabhupada is calling you, come. Lali. Lala and Lali, come. Come, yes. Okay. 1 second. Lali, take that microphone. Lala, come here. He knows already. See? I didn't ask him to sit, but he knows his place. He's exploring. Good. Take him away. He's got like Shiva Shakti, it destroys everything, looks like. I give your sister, brother. Yes. Yes. What's your name? Keshav. What's your sister's name? Sanvi. Tanvi. Sanvi. Hey, Haribo, sit down. I think his brother came earlier, right? Tanvi and Sanvi and Keshav. And Mama's name? Mama. Nani. Hey, she looks young, Nani. Young at heart. So your grandchildren. See, he's like, yeah. You know, Vital stands like that. So, Sanvi, take the microphone. So how many books your grandmama, you and him would like to sponsor for the temple and also to take home? Only one. Only one book Yes. for yourselves. And for sponsoring for temple, how many? Temple sponsor. Give grandmom. I say in Hindi. Hare Krishna. One for children and one for mandir. One for? Mandir. One for mandir and one for temple. That's very nice. Huh? That's good. Hare Thank Krishna. you. No, photo. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Come, Gandhi. Hare Ram, Hare Smile. Nice. Thank you very much. Slowly. Yeah, good. Prabhu. Hare Krishna. Give microphone to Prabhu. Is that your... Thank you, Mataji. Right. Your papa, huh? Hare Krishna. So, what's your name? Anil Kumar. Anil Kumar. Anil Kumar. And? Soham Arora. Soha? Soham Arora. He is my son. Soham and Anil.
How many books you'd like to sponsor for the temple and for the One face? I want to sponsor to temple and one I want to take for How many myself. for temple? One. One and one for yourselves. Wonderful. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Prabhu, come. Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Looks like this is eternal. It's not stopping. Anyone else would like to honor the temple and take a book of Srila Prabhupada's history and Leela? और कोई चाहता है? So, what's the program? You said something about Aarti. What time? Okay. So there'll be Aarti soon. You can tell the pujaris. Yeah. There'll be Kirtan with Aarti, right? Kirtan with Aarti. And then there's prasadam for everyone. And where they serve prasad, they all know. Yeah. There's a feast. What's the menu? मेन्यू क्या है बताइए? You don't know what's the menu? How many sabjis, rice, dal? कितनी सब्जी दाल राइस है? Dal, rice, sweet, 2 sabjis. Any paneer is there? Paneer sabji? Oh, paneer sabji also in feast. Translate. पनीर सब्जी भी है फीस्ट में. Okay. So I am very happy and pleased to be in your nice company and wonderful association. मैं आप सबके साथ आपका सत्संग प्राप्त करके बहुत ही आनंदित हूँ. And my heart is telling me that I may have to come again. और मेरा हृदय मुझे बोल रहा है कि मैं यहाँ फिर से आऊँगा. हरि बोल. And we thank you very much for being tolerant with me. मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे सहन करने के लिए. And hopefully I may be allowed to be of service to you again in the future. और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप मुझे फिर से आपकी सेवा के लिए अनुमति देंगे. Shri Ram Navami Mahamotsav ki जय. Srila Prabhupada ki जय. ISKCON Nigdi Yatra ki जय. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki जय. Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki जय. Shri Shri Gaur Nitai ki जय. Shri Shri Radha Govinda ki जय. Nitai Gaur Premanande. हरि हरि बोल. Hare Krishna. So now we'll assemble for Aarti, and then there'll be Kirtan with the Aarti, and then you can honor Prasadam. Say, give आप me an announcement. अभी यहाँ इसके बाद आरती होगी, उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे, फिर प्रसाद होगा. हरि बोल. सर्व भक्तांना विनंती आहे की थोडी एक 5 मिनिटासाठी खाली बसून घ्यावं प्लीज. हरे कृष्णा. सर्व भक्तांचे रामनवमी उत्सव निमित्त गोविंदामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आजचे अभिषेक व अन्नदान खालीलप्रमाणे आहे. कृपया ज्या भक्तांनी अन्नदान आणि अभिषेक केलेला आहे त्यांनी ताबडतोब पुढे यायचं आहे. गजानन शिंदे उपस्थित असतील तर पुढे यायचं आहे. प्लीज जरा लवकर या, वेळ झालेली आहे. गजानन शिंदे यांनी आजचे अभिषेकची सेवा केलेली आहे. प्रभूजींकडे या. जरा जागा. यानंतरचे अभिषेकची सेवा केलेले नेहा गुप्ता आहेत का? कृपया पुढे यायचं आहे. नेहा गुप्ता अभिषेकची सेवा आहे त्यांनी दिलेली आहे. पुढचे आहेत लक्ष्मण वायदंडे प्रभू. लक्ष्मण वायदंडे. हा नेहा गुप्ता आले का? लक्ष्मण वायदंडे, नेहा गुप्ता, नेहा गुप्ता आजच्या अभिषेकची सेवा दिलेली आहे. अखंड कृपा त्यांच्यावरती राहो. लक्ष्मण वायदंडे प्रभू आलेत का?
पुढे यावे प्लीज लवकर. त्यानंतरचे आहेत विनायक देशपांडे. विनायक देशपांडे, लक्ष्मण वायदंडे. प्रभूजी लवकर या प्लीज. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ज्योतिराव आजचे अन्नदान दिलेले आहेत. ज्योतिराव पुढे या प्लीज. ज्योतिराव प्लीज पुढे या लवकर. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. डॉक्टर अमर शहा उपस्थित आहेत का? प्लीज लवकर पुढे या. त्यांनी आज आपल्या रामनवमी निमित्त अन्नदान दिलेले आहे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम विकास नागरगोजे. यानंतर विकास नागरगोजे. विकास नागरगोजे पुष्पाभिषेकची सेवा दिलेली आहे. उपस्थित असतील पुढे या प्लीज लवकर. विकास नागरगोजे. यानंतर व्हीटीए सेवाची 2017-18 ची बॅच आहे आणि अभिषेक सेवा दिलेली आहे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. व्हीटी बॅच आहे 2017-18 याची सेवा दिलेली आहे. व्हीटी बॅच. कृष्णा हरे ना. शिल्पा शर्मा उपस्थित आहेत का? शिल्पा शर्मा माताजींना जाऊ द्या प्लीज, जर लवकर या. यानंतरचे आहेत अतुल खैरनार. शिल्पा शर्मा. आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा. अतुल खैरनार. हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम. चंद्रकांत उपाध्याय. चंद्रकांत उपाध्याय प्लीज या पुढे लवकर. हरे कृष्णा कृष्णा. मायापूर बेसचे सर्व. मायापूर. हरे राम राम राम. ह्या महिन्याचे मासिक रामायण हे विशेषांक मासिक 200 रुपये त्याची प्राइस आहे. पण आज रामनवमी सवलतीच्या दरामध्ये ते 100 रुपयाला स्टॉलवर खाली सर्वांना भेटणार आहे. कृपया आपण त्यांचाही लाभ घ्यावा. या महिन्याचे मासिक रामायण हे विशेषांक बुक. या महिन्याचे मासिक रामायण हे विशेषांक श्री राम. या महिन्याचे मासिक मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रचार करण्यास येथे उपस्थित आहेत सर्व भक्त आणि
धर्मप्रेमी यांनी ह्या मासिकाची सभासद नोंदणी करावी व त्यांच्या आपल्या संपर्कातील लोकांना सभासद बनवून प्रचार कार्यात सहभाग घ्यावा. सभासद नोंदणीची पावती पुस्तके खाली मासिक स्टॉलवर मिळतील. अधिक माहितीसाठी जडभरत दास आणि मासिक स्टॉल यावर आपण संपर्क साधावा. यानंतर कीर्तन होईल आणि सर्वांसाठी महाप्रसाद.